আকৌ বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিলে নে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে অতি ডাঙৰ খবৰ নতুনকৈ 3 লাখৰো অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আপুনি কেৱল গাঁও সভালৈ যাওক গাঁও সভাত যোৱাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যদি আপোনাৰ 5 একর পৰ্যন্ত মাটিও আছে তেন্তেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহনো আছে তেন্তেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব মাহিলি যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 15,000 হয় তেন্তেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আবেদন কৰিছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আৰু যিসকলে আবেদন কৰি পেলাই গাঁও সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইসকলে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ গতিকে আপুনি এতিয়ালৈকে যদি আবেদন কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তলৈ সবিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে তাৰ আগতে তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আপুনি বাৰু এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিলে নে নাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ 3,76,000 লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ঘৰ কেৱল ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলেই হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ এজনো দুখীয়া মানুহ কেঁচা ঘৰত আৰু থাকিব নালাগে বা থাকিব লগা পৰিস্থিতি আৰু সৃষ্টি নহয় প্ৰতিমাহে যদি আপুনি 15,000 উপাৰ্জনো কৰে তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ দুচকীয়া বাহন থকা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি গাড়ীও আছে তেন্তেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব 5 একর পৰ্যন্ত 5 একর ভূমি থকা কৃষকেও লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী ঘৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ আৰু নতুনকৈ 3 লাখৰো অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে জনতাৰ সেৱা আমাৰ বাবে পূজাতকৈও কম নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে শনিবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানেও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বিনামূলীয়া ঘৰক লৈ সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ঘৰ সকলোৱে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব প্ৰতিমাহে যদি 15,000 আপুনি উপাৰ্জনো কৰি আছে তেন্তেও আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব 5 একর ভূমি থকা কৃষকেও বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব আৰু আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ড আপোনাৰ আছে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই শীঘ্ৰেই আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে আবেদন কৰিছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই আজি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক আবেদন কৰা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে আৰু সকলোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যেহেতু 3,76,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ শীঘ্ৰেই আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু গাঁও সভালৈ আপুনি যাব লাগিব প্ৰতিখন গাঁৱে গাঁৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গাঁও সভা আৰু সেই গাঁও সভাত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই গাঁও সভাত আপুনি ভাগ ল'ব লাগিব গাঁও সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে আবেদন কৰিলে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে প্ৰায় 70-80 হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিলে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো তেন্তে শীঘ্ৰেই আপুনি আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পিছত আপুনি গাঁও সভালৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছো 3 লাখ ঘৰ পাওঁ 3,17,000 ঘৰ পাওঁ তেতিয়াহ'লে পুৰণা তালিকাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ঘৰ দিয়াৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম मैं माननीय हमारे ग्रामोन्नयन मंत्री कृषि मंत्री जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि लास्ट टाइम आप जब आए थे वो समय हमारे 6 लाख मकान का काम बाकी था आपने तुरंत हमको जनवरी महीना में आप गुवाहाटी में आए और 3 लाख मकान बनाने के लिए आपने स्वीकृति दिया हमने काम शुरू किया अगर आप और 3 लाख मकान का स्वीकृति हम लोग को दे देते और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक इनोवेशन का फंड है यहां बहनें मकान बनाएंगी अजय ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं केवल पतिदेव के नाम पर नहीं होते बहनों के नाम पे होते हैं बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें और इसलिए मैंने अभी जय प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है इन बहनों को मजबूती देने के लिए उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा हम उन बहनों को सहयोग करेंगे अभी दादा कह रहे थे
कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा। आपको याद होगा जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर रहा हूं। अब जो अच्छा काम करे उसको तो देना ही पड़ेगा ना। और यहां रुकने वाले नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि फिर से सर्वे हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि ये मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमा ही रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काहे को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और ना, जो छोटे किसान हैं, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं, और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन। আমি নতুনকৈ 3 লাখ ঘৰ পাওঁ, 3,17,000 ঘৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে পুৰণা তালিকাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ঘৰ দিয়াৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। मैं माननीय हमारे ग्रामोन्नयन मंत्री, कृषि मंत्री जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि लास्ट टाइम आप जब आए थे उस समय हमारे 6 लाख मकान का काम बाकी था। आपने तुरंत हमको जनवरी महीना में आप गुवाहाटी में आए और 3 लाख मकान बनाने के लिए आपने स्वीकृति दिया। हमने काम शुरू किया।
अगर आप और 3 लाख मकान का स्वीकृति हम लोग को दे देते हैं, तब हमारा पुराना जो हमारे लिस्ट थे वो पूरा खत्म हो जाएगा, हम सबको मकान देने में कामयाब हो जाऊंगा। यार पिছত 26 लाख घৰৰ পিছত এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন আহে যে য'ত যাৰ নাম নাই তেওঁলোকে ঘৰ কেনেকে পাব। যোৱাবাৰে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দ্বিতীয়বাৰ শাসনলৈ আহিয়ে 5 কোটি আৰু নতুন ঘৰ বনাবলৈ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিলে। আমি জিঅ' টেগিং কৰিছো, আগে পিছে জিঅ' টেগিঙৰ দ্বাৰা নহয়, এইবাৰ আমি জীৱিকা সখী বাইদেউসকলৰ দ্বাৰা জিঅ' টেগিং কৰিছো, গাঁও সভা হ'ব আৰু যোগ্যজনক আমি আকৌ নতুন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম আৰু লগে লগে এইবাৰ আমি সেলফ জিঅ' টেগিং অৰ্থাৎ নিজৰ जियो टैगिंग निजे करिब पारो। जांच करने का बाद तब हमारा हर गरीब को